Hello my dear students, welcome back in S Academy Digital classes. So today I am going to talk about the again plot with the pyplot data visualization and this is the part 5 video. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था plot method के बारे में और हमने जाना था line charts के बारे में, line graph के बारे में. And today I am going to discuss about the scatter chart. How you can use the scatter chart, what is the scatter chart, how you will create the scatter chart, and today I am going to tell you how you can create the scatter chart with the help of the plot function. So these topics I am going to discuss with today you. One is the scatter chart, what is the scatter chart. Second, we are going to discuss about how we can do the plot functions and what is the summary of the scatter chart, means how you draw the scatter chart through the plot functions. If you have watched my fourth video, part 4 video, then you know about this कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि ऐसे एक सिचुएशंस होते हैं जहां पे अगर आप लाइन फंक्शंस को प्लॉट फंक्शंस को यूज करो, लाइन चार्ट के फंक्शन यानी कि प्लॉट को यूज करो कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया के साथ, तो दैट इज वर्क्स एज अ स्कैटर चार्ट. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्कैटर चार्ट होता क्या है. What is the scatter chart? A scatter chart is a graph of plotted points on two axes that shows the relationship between the two sheets of data. ये actually plots पे ग्राफ के ऊपर कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करके रखा जाता है और डिफरेंट कलर्स में देखो आपको ये दिख रहा है. ये एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के काम में आता है कि दो डेटा के बीच में आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो. pyplot library having two functions for creating a scatter chart. There are two functions and one is called plot function and second is called a scatter function. So today we are going to learn the scatter chart through the plot function. So scatter charts using the plot function is what? When plot function used with the marker type argument and without the line style argument, means it will create a scatter chart. When the plot function used with the marker type argument and without the line style argument, it will create a scatter chart. So look at this. This is the marker type and this is the color and marker type, but I have not given the line styles and I have given the marker size. So this is the argument. This is the situations where a scatter charts form with the help of the plot function. Okay, so I'll tell you this about this one more thing. So move on this. So let's see the examples. Can we use this? Okay, so here I'm just showing you. This time I'm not giving the anything. I'm just mentioning the marker type. I'm mentioning the marker type. I'm not given the color of the marker and I'm using the run command. And look at this. It is walking. It is walking and it's giving the scatter chart. This is the scatter chart. Means a scatter chart, if you want to draw, you can draw the scatter chart with the help of these three arguments only. Means with the plot function you have to give the x-axis, you have to give the y-axis, and you have to give the only marker type. You have to give only marker type. So any marker type you can give. Any marker type you can give. So there are different types of the marker, as I shown you previously. There are 22 types of the marker type is there. So आपको यहाँ पे सिर्फ marker का type बताना है, आपको line style नहीं देना है. बहुत simple uses है plot functions का. और अब आप इस कोड को रन करोगे तो जब आपको जो ग्राफ मिलेगा वो आपको scatter charts के फॉर्म में ही मिलेगा. तो इन चीजों का ध्यान रखना है. And with the help of this plot functions you can draw the scatter chart. Now the plot function summary. At last I am going to tell you about the everything about the plot function. कि what is the plot function, क्या क्या arguments हमें देने हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं. सबसे पहले आप डेटा 1 प्रोवाइड करते हो, फिर डेटा 2 देते हो, फिर आप कलर कोड एंड मार्कर टाइप को एक साथ दे सकते हो. ये ऑप्शनल है. कलर कोड को हम अलग भी दे सकते हैं, मार्कर टाइप को हम इंडिविजुअल भी मेंशन कर सकते हैं और आप साथ में भी देते हो. फिर आप लाइन विड्थ बताते हो, लाइन स्टाइल बताते हो. ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, सिर्फ डेटा 1 डेटा 2 को साथ में रखना, उसके आगे आप ऑर्डर चेंज करोगे क्योंकि नॉर्मली आप लिखते हो. अगर नहीं चेंज कर रहे हो, सिर्फ वैल्यू दे रहे हो, तो कुछ इस तरीके से देना होगा. मार्कर साइज, मार्कर के टाइप को चेंज करना, मार्कर के साइज को चेंज करना, मार्कर के एज कलर. डेटा डेटा 1 जो है वो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिसके बेस पे आपका ग्राफ ड्रॉ होगा. कलर कोड जो कलर ऑफ द लाइन एंड मार्कर टाइप इज द मार्कर सिंबल होता है. लाइन विड्थ जो विड्थ ऑफ लाइन होगी कि भाई लाइन की विड्थ क्या होगी, थिकनेस क्या होगा, उसके लिए हम लाइन विड्थ को यूज करते हैं. लाइन स्टाइल मींस अलग अलग तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. हम लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, हम इंडिविजुअल लाइन ड्रॉ करते हैं. तो दिस इज द लाइन स्टाइल, सॉलिड, डैश, डॉटेड और ऐसा कुछ. मींस हम इस तरीके का भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. मार्कर टाइप, दिस इज द मार्कर सिंबल कि व्हाट टाइप्स ऑफ द मार्कर सिंबल यू वांट टू यूज. एंड दिस इज द मार्कर साइज, साइज ऑफ द मार्कर इन अ पॉइंट्स. दिस इज द पॉइंट, साइज ऑफ द मार्कर इन अ पॉइंट्स.
and the last is the marker is color. कि what is the color of the marker. So this is the about the plot function. Now you understand कि how you will use the plot functions for drawing the line graph, for drawing the line chart, as well as for drawing the scatter chart. तो प्लॉट के मल्टीपल यूजेज हैं. आप लाइन ग्राफ भी बना सकते हैं, आप स्कैटर चार्ट भी बना सकते हैं. उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.